मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है. Welcome to this edition of Manushi Samvad. Today we're going to discuss a very controversial topic, which is the anti-sedition law. आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे याचिका डाली जा चुकी है कि एंटी-सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह के खिलाफ जो कानून है ये मांग की जा रही है कि उसको रद्द कर देना चाहिए. ये अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने का है. खैर वो तो इंडियन पीनल कोड भी अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने का है, तो उस हिसाब से तो इंडियन पीनल कोड भी, आईपीसी भी, सीआरपीसी भी, सब चीज़ें रद्द कर देनी चाहिए. तो इसको कॉलोनियल विंटेज का कि ये ओप्रेसिव ब्रिटिश रेजिम का हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी है. उस पर सुनवाई हो रही है कि ये कानून रहना चाहिए कि इसको रद्द कर देना चाहिए. और ऐसी ही बहस एंटी टेररिस्ट कानूनों के खिलाफ भी लग चुकी है. आपको मालूम है कितनी बार उनमें बदलाव किए गए, एक को रद्द किया गया, फिर नया लाया गया. तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं. एक तो नागेश्वर राव जी, जो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और सबसे ज्यादा आप ही की सर्विस पे नागेश्वर जी चाहा जाता है कि आप लोग गलत फलत एंटी सेडिशन लॉ ठोक देते हैं. और दूसरे हमारे प्रिय मित्र अंकुर शर्मा, एडवोकेट, जम्मू में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ रहे हैं. तो ये दोनों ही कम से कम कानून की जानकारी तो रखते हैं और इस कानून का कितना सदुपयोग हो रहा है या होने की संभावना है, उसकी जरूरत है कि नहीं, या कितना दुरुपयोग हो रहा है या होने की संभावना बनी रहती है, इस पे चर्चा चल रही करेंगे दोनों. एक मिनट नागेश्वर जी और अंकुर जी, एक मुझे बात ऐसे जब मैं बात कर रही थी बातों ही बातों में मेरे दिमाग में आई ये बात, जब ये ड्रकोनियन लॉज, अब्यूज, मिसयूज की बात आती है तो जो हमारे फैमिली संबंधी लॉज हैं, 498A है या रेप लॉ है, जब कोई उसके दुरुपयोग की बात करते हैं तो यही पूरी लॉबी जो आज सुप्रीम कोर्ट में एंटी सेडिशन लॉ को चैलेंज करती है कि इसका दुरुपयोग होता है, तो वो उसमें नहीं, जो फैमिली में दुरुपयोग हो, फैमिली इसके खिलाफ हो, वो जायज समझते हैं और इस कानून के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के. अब ये कौन कौन है जो खास डरते हैं देशद्रोह के विरोध में जो कानून बना हुआ है और इनकी क्या तकलीफें हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स, इस पे चर्चा करेंगे. उससे पहले वो कानून क्या है, जरा हमारे एडमिन जी आप स्लाइड ले आइए एंड देन वील स्टार्ट एनालाइजिंग इट. नहीं, यूपीए एक्ट नहीं, पहले लाइए सेडिशन लॉ. हाँ, सेक्शन 124A डिफाइंस सेडिशन एज, ये है जी डेफिनेशन: whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added. तो आपको आजीवन कारावास हो सकती है यदि आप जो लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नफरत फैलाते हैं या उसके खिलाफत उसको सबवर्ट करने का काम करते हैं शब्दों द्वारा, या जो भी आपकी हरकतें हैं. इसमें टेरर एक्ट नहीं, उसके लिए अलग कानून है जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के नाम से कहलाता है. तो बताइए जी नागेश्वर जी, पहले आपसे पूछ लें. और एक बात मैं बता दूं अंकुर, क्योंकि 8:45 बजे इनको निकलना है बहुत जरूरी काम से, तो आखिरी के 15-20 मिनट भी केवल नागेश्वर राव जी को ही डिवोटेड होंगे. तो नागेश्वर जी, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? Yeah,
Namaskar. I would like to show the Act, the Section 124A in full because you have shown only part of it. Okay. So how can I show that? Because I have it in my Windows Send screen. it to send it to Ashish No, on the no. phone. I think there is a provision to show the screen. आप आशीष बता दीजिए, आपको बता देते हैं, तब तक अंकुर बात करते हैं. आशीष विल कॉल यू एंड ही विल सॉर्ट इट आउट No, विद यू no, सो there is a दैट provision. There is a yeah, provision. there is a provision, but you have to have admin powers, no, to add something to the screen No, I think or send it. I think probably I can help him by reading out the Okay. provisions. No, no, I can also read it. Okay, no. Okay, let me. It also आप भेज says. दीजिए ना, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी. व्हाट्सएप पे भेज दीजिए Hello. और मैं फॉरवर्ड करती हूँ जी. चलिए अंकुर, आप शुरू कर लीजिए प्लीज. Yeah. अंकुर, यू स्टार्ट अंकुर. तब तक नागेश्वर जी के साथ आशीष कोऑर्डिनेट कर लेता है. सेक्शन 124A लार्जली जो टेस्ट इस सेक्शन को पास करना था वो था बिटवीन फ्री स्पीच और नेशनल सिक्योरिटी. हाउ डू यू बैलेंस बोथ दिस थिंग्स? क्योंकि देखिए फ्री स्पीच भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है अंडर आर्टिकल 19. इट इज अ फंडामेंटल राइट. And then obviously national security is also something which cannot be ignored or overlooked. अच्छा, ये एक परिस्थिति है जो मैं एक लीगल एंगल आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ. आपने सेक्शन 124A को दिखाया, प्रोबेबली नागेश्वर जी और उसके साथ डिटेल में बात करेंगे. देखिए इसमें मैं सादा शब्दों में पहले बता दूं बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग इट थ्रू अ पॉलिटिकल एंगल. सेक्शन 124A यही कहती है कि आप कोई शब्द यूज करें, साइन यूज करें, कोई रिप्रेजेंटेशन विच इंक्लूड्स कार्टून्स एटसेट्रा, जिससे हेट्रेड या कंटेम्प्ट पैदा हो, या कोई ऐसा अटेम्प्ट आप करें जिससे डिसअफेक्शन पैदा हो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, दैट इज समथिंग विच इज टू बी अंडरलाइंड. तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है, 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर केवल फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है. और इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है नीचे, जो सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा है, उसमें डिफाइन किया गया है कि डिसअफेक्शन विल आल्सो इंक्लूड डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी. अब ये देखिए, अगर आप ये पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें, तो नॉर्मली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी कि क्यों 124A के खिलाफ लोग हो जाने चाहिए. ऑब्वियसली जो कंटेम्प्ट, हेट्रेड, डिसलॉयल्टी एटसेट्रा एटसेट्रा जो लोग पैदा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ, दे हैव टू बी डेल्ट विद. क्रिटिसिज्म का ग्राउंड वहां पे आ जाता है जहां पे फ्री स्पीच के साथ टकराव होता है. सरकारें इस कानून का दुरुपयोग करती हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डील करने के लिए. अच्छा, लेकिन ये जो दुरुपयोग का आर्ग्यूमेंट है, तो ये देखिए, ये आप किसी भी कानून, किसी भी धारा के साथ जोड़ के उठा सकते हैं. ये कोई आधार नहीं है जिस आधार पे सेक्शन 124A खत्म कर दी जानी चाहिए. और फिर जिस तरीके से 1962 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, यानी संवैधानिक खंडपीठ ने सेडिशन के लॉ को एक तरीके से रीड डाउन ही कर दिया है, तो इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि सेक्शन 124A को पूरे तरीके से आईपीसी में से खत्म कर दिया जाना चाहिए. हाँ, ये हो सकता है कि फ्रेश गाइडलाइंस प्रोबेबली इशू की जा सकती हैं कि कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि इस कानून का दुरुपयोग रुके. क्योंकि देखिए, वी हैव टू बैलेंस, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, फ्री स्पीच विद नेशनल सिक्योरिटी. अच्छा, जिस लॉबी की आपने बात की, वो फ्री स्पीच और नेशनल सिक्योरिटी का आर्ग्यूमेंट तो लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ्री स्पीच को इस्तेमाल करके, उसका दुरुपयोग करके देश की एकता और अखंडता पे सवाल उठाने का कार्य करते हैं. जो लोग इस कानून को बिल्कुल खत्म करवाने के लिए प्रयासरत हैं, लार्जली वो वही लोग हैं जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंडिया की चैलेंज करते हैं और उसे फ्री स्पीच के नाम पे प्रोबेबली अपने लीगल सिस्टम को सबवर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा, केदारनाथ में तो क्लियरली स्टैब्लिश हो गया
डिसऑर्डर क्रिएट किस परिस्थिति में ये सेक्शन अप्लाई की जाएगी, एक्चुअल फिजिकल वायलेंस होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली उस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ लीगल फ्रेमवर्क आपको चाहिए। अच्छा, ये लॉबी वही है या ये लोग वही हैं जो बहुत पीछे पड़ के इस कानून को खत्म करवाना चाहते हैं, जो एंटी टेररिस्ट लॉज के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, ठीक बात है, लेकिन टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो जनरल कंसेंसस जो सुप्रा नेशनल एजेंसीज भी हैं या यूएन एफिलिएट एजेंसीज हैं, जो टेररिज्म पे कन्वेंशन और उसके ऊपर जो प्रयास होते रहते हैं, हालांकि टेरर की कोई एक सटीक डेफिनेशन पे मुल्क देश जो है वो नहीं अग्री हो पाए हैं, लेकिन एक चीज सब लोग मानते हैं, यूरोप भी मानता है, वेस्ट भी मानता है, कि आपको टेररिस्ट एक्ट्स को हैंडल करने के लिए, ऐसे सेसेशनिस्ट एक्ट्स को हैंडल करने के लिए, ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए जो आपके देश की एकता और अखंडता पे सवाल उठाते हैं, उन्हें हैंडल करने के लिए अपने लीगल सिस्टम को ऑगमेंट करना पड़ेगा, जिसमें ऑब्वियसली फ्री स्पीच एटसेट्रा एटसेट्रा वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, ताकि इतने बड़े मेनेस को हम हैंडल कर सके। भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे वर्स्ट विक्टिम है, अगर आप यूरोप और वेस्ट के उन देशों की बात कर ले, इन कंपैरिजन टू देम, जो टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम है। और ये लोग हमारे एक इस तरीके का यहाँ पे माहौल क्रिएट कर देते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ जो इस तरीके की सेसेशनिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने में सक्षम हो, वो किसी ना किसी तरीके से खत्म हो। टाडा पोटा एटसेट्रा जो सारे कानून थे उसका इतिहास आप सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस डिबेट को दो दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है। एक तो लीगल पहलू हो गया, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जिसमें राष्ट्रवादी लोग भी विश्वास करते हैं वो पहलू हो गया, और दूसरा वो लोग जो देश को खंड विखंड करना चाहते हैं और हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसिस को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स का एब्यूज करके सिस्टम को अंदर से सबवर्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो लोग काम कर रहे हैं सेक्शन 124A को रिपील करने की दिशा में, लार्जली वो वही लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके इसको इस देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। आपने देखा पूर्व में ही कितनी ऐसी एग्जाम्पल्स आई, यूनिवर्सिटीज में से भी, देश के विभिन्न एरियाज में से भी ऐसी स्पीचेस ऐसी आई जो अल्टीमेटली एक ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग का काम करती हैं जिससे देश की एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी सवालों के घेरे में आ सकती है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है वो यही रहेगा अल्टीमेटली, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है, कि उसे लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी और फ्री स्पीच, ये जो दो चीजें हैं, इनमें बैलेंस स्ट्राइक हो सके, ये कर सकते हैं। करंट नीड्स को देख के केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट को आधार बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ फ्रेश गाइडलाइंस इशू कर सकती है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और इस कानून का खासकर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ जो दुरुपयोग है, जो स्ट्रिक्टली मैं कहूं जो पॉसिबिलिटी किसी भी कानून की हो सकती है, उसे कंटेन किया जा सकता है। बट यू कांट हैव अ सिचुएशन वेयर यू अलाउ पीपल टू रेज क्वेश्चंस ऑन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें ना दो बातें आती हैं अंकुर। जब ये परिभाषा हम पढ़ते हैं तो दो शब्दों को मुझे लग रहा है ट्वीक अगर किया जाए, दो पॉइंट्स को। एक तो ये कि यहाँ लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात, यानी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी कई ऐसी हैं भी जो कंटेम्प्ट के अधिकारी हैं। अब आई हैव फुल कंटेम्प्ट फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आई हैव फुल कंटेम्प्ट फॉर PFI, I have full contempt for PDP, I have full contempt for NC and even Congress party in many phases. It deserves contempt, and many actions of even BJP, you and I would agree, ये contempt के हकदार बन जाते। किंतु अब इसमें दूसरी बात जो आती है राष्ट्र के खिलाफ, मुझे लग रहा है कि लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बजाय उसके खिलाफ बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता आप और हम सब चाहेंगे, परंतु राष्ट्र के खिलाफ जब JNU में नारे जो लगाते हैं, केवल नारे नहीं लगाते, उस दिशा में काम कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह,
ये अनफॉरगिवेबल है. दिस इज नथिंग टू डू इफ दे सेड बीजेपी तुझे स्मैश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. वैसे इंशाल्लाह मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ. वो शब्द ही मेरे लिए गाली समान बन जाता है क्योंकि डर लगता है उससे. तो परंतु अगर बीजेपी को कहे, कोई कम्युनिस्ट पार्टी को कहे, कांग्रेस, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकार में हो ना हो. दूसरा, और वो साथ में मेरा ख्याल जोड़ना बहुत जरूरी है कि आप झूठ के आधार पे, मिस इन्फॉर्मेशन के आधार में राष्ट्र विरोधी बातें फैला रहे हो. And then in that sense you act as some kind of a protective shield for terror groups. जो ये सारे overground organizations हैं, चाहे माओवादियों की, चाहे जिहादियों की, जो JNU से लेकर सारे देश में यूनिवर्सिटीज में फैले हुए हैं, बहुत से टीवी चैनल्स इनसे प्रभावित हैं. तो मुझे लगता है ये दो अगर पॉइंट्स नोट किए जाएं, एक तो राष्ट्र के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ जो मर्जी बोलो. दूसरा, झूठ. इफ इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड दैट यू आर लाइंग, यू आर मिस इन्फॉर्मिंग, देन एंड देन प्रोवोकिंग एंटी राष्ट्र एक्टिविटीज और सेंटिमेंट, देन यू डिजर्व टू बी इन जेल. आप क्या कहेंगे नागेश्वर? Absolutely. You agree? Ankur, you agree? Absolutely. जी. And I think जो subsequent judgments हैं courts की भी, I think they take care of such situations. और मैं आपको कहूँ कि आज ये कानून अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखें तो बिल्कुल वैसे ही सेट किया गया है जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. कोर्ट्स भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के खिलाफ इस्टेब्लिश्ड है कि इस व्यक्ति ने अगर आवाज उठाई है तो सेक्शन 124A की एफआईआर क्वैश कर देंगे. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मुझे लगता है कि गलत जजमेंट्स भी हो सकती हैं. मैं कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि 100% जजमेंट्स ठीक होंगी, बट मुझे लगता है कि ब्रॉडली कंटूर्स जो हैं वो सेट किए गए हैं. और जिन एक्टिविटीज की आपने बात की, वही एक्टिविटीज हैं जो इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट और देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, डिप्लॉय करती हैं, इस्तेमाल करती हैं. ओवरग्राउंड वर्कर्स की आपने बात की, हाँ बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला जो कानून है जिसके तहत टेररिज्म और सेसेशनिज्म को हैंडल किया जाता है, प्रोबेबली ऐसे कानून ऐसे लोगों के खिलाफ डिप्लॉय किए जाने चाहिए जो राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं. सेक्शन 124A मुझे लगता है कि अपनी जगह प्रोबेबली ठीक है, एज नाउ प्रोबेबली डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट थ्रू वेरियस जजमेंट्स. क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि देखिए हमें ऐसी परिस्थिति भी नहीं क्रिएट करनी है कि आने वाले समय में पॉलिटिकल ऑपोजिशन आप किसी पार्टी की ना कर पाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट की आप, जैसा आपने कहा कि वो सेफगार्ड्स एक नॉर्मल सिटीजन को चाहिए भी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है भी. अच्छा, इससे सबसे अधिक प्रॉब्लम तो एंटी नेशनल्स प्रोबेबली उनको ही है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो सेसेशनिज्म को फ्री स्पीच के नाम पे सपोर्ट करते हैं. बट मुझे लगता है कि हमें अपने यूएपीए के लीगल फ्रेमवर्क को भी फर्दर ऑगमेंट करने की जरूरत है, ताकि जेएनयू में होने वाली एक्टिविटीज, जैसी आपने नारेबाजी जिसकी बात की, मैं सब एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, नारेबाजी नहीं है, वो नारेबाजी नहीं है. इट इज हाँ. और वो काम भी, ये स्लीपर सेल्स भी हैं, अवेकन्ड सेल्स भी हैं, जगे हुए भी हैं, स्लीपर भी हैं जेएनयू में, अच्छे खासे माओवादियों के भी और इस्लामिस्ट जिहादियों के. लार्जली मैं लास्ट में कंक्लूड यही करूं कि भाई मेरा ये मानना है कि हमें अपने लीगल फ्रेमवर्क को ऑगमेंट करना पड़ेगा टू अ लेवल वेयर वी कैन हैंडल ये जो नैरेटिव्स के जरिए, ये जो मतलब आर्गुमेंट बिल्डिंग के जरिए देश को तोड़ने का काम चलता है. थोड़ा सा लीगल, मतलब 124 है तो बड़ी छोटी चीज है, हमें दूसरे कानूनों को भी ऑगमेंट करना पड़ेगा. और एक इस पे जनरल कंसेंसस भी है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो लोग सचमुच में टेररिज्म को हैंडल करना चाहते हैं. जी. नागेश्वर जी, मैं आपसे, जो मैंने 2 पॉइंट रेज किए थे कि पॉलिटिकल लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बजाय अगर हम कह दें राष्ट्र के खिलाफ, कंटेम्प्ट, डिसडेन, नॉट जस्ट लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट. और दूसरा, बेस्ड ऑन लाइज, मिस इन्फॉर्मेशन, ये ट्वीकिंग मुझे लगता है 124A में जरूरी है. बट अदरवाइज आई थिंक today India needs anti-sedition law more than ever, just with some improvements. What would you say to that?
Sedition is variously described because the difference between treason and sedition is very thin. So treason is no longer used, but then the ingredients, some of the ingredients of the treason are incorporated into the sedition law. Section 124A, if you can translate into Indian languages, it can be called Rajadroh, it can be called Deshadroh, it can be called Rastradroh. So now here is 124A of Indian Penal Code. You had shown only part of it. It is not only, the punishment is not only for imprisonment for life, but it can even extend. It says no, it may also go up to 3 years. In other words, basically it says that no, minimum 3 years and maximum imprisonment for life, including um, fine. Now it describes the disaffection. What is meant by disaffection? Because the controlling word in this particular section is disaffection towards the government established by law. What is disaffection is given in the explanation below. It includes disloyalty and feelings of enmity. And of course, there is other explanations given in that. It says that the normal criticism of the government policies is not a sedition, and expressing disapprobation of the administration is not a sedition, and such other kind of things. Now, what are the objectionable points in this? Because this law has been in existence since 1870. The Indian Penal Code was enacted in the year 1860, and thereafter this section, new section, was inserted in the year 1870, which has been further expanded in 1898. And when we got independence, some of the adjustments were made through the adaptation of laws order, and then also the punishment was enhanced to imprisonment for life in the year 1955. Now, this section has been in existence for the last 124 years, and 72 years after the constitution came into force. But what is the problem? Why the issue is now cropping up now? The allegations or the criticism there are threefold, or three or four. One is that it is a colonial vestige. We have already explained the whole governance in India is colonial vestige. The parliament is colonial vestige, the Rashtrapati is colonial vestige, the cabinet minister, the Westminster model of governance, the constitution itself, the Supreme Court, High Court, IPC, CRPC, everything is colonial vestige. Exactly. So that hardly is a ground to say that no, it's a colonial vestige, we should not. Because in that case, no, you have to throw everything out and then go for something new which is indigenous. And I don't think that is possible, because this is being selectively used in order to make out some case. And then the second and most important is that it infringes the freedom of speech and expression as guaranteed by Article 19 of the Constitution. But the Article 19 itself imposes or enables paid to impose certain restrictions on the freedom of speech. It is not that no, the freedom of speech is unbridled or you can speak anything, anything. There are restrictions which can be placed, and even the United Nations Declaration of Human Rights, as well as the conventions on there are so many UN conventions which say that no, freedom of speech can be curtailed by a law made by the uh, parliament or the state or the national legislature of the country. So, and secondly, why only 124A? Because there are so many laws which infringe on your freedom of speech. For instance, let us start with SC/ST Prevention of Atrocity Act. Now, suppose you are a Brahmin, if I call you Brahmin, it's not an offense. But if I call a scheduled caste by his caste name, that itself that's an offense. If I call a tribal by his tribe name, it's an offense, because the person can take offense to that.
So there is a restriction on the freedom of speech. In fact, it is very severely restricted as far as SC/ST Prevention of Atrocity Act is concerned, vis-a-vis the scheduled caste and scheduled tribe on the one side and the rest of the population on the other side. That is there. Then secondly, you have 153A, that is about speaking about the religion, or trying to criticizing the religion, or creating enmity and all those kind of things. Then 153 double A is also there. Let me show you 153A. This is 153A. Ashish ji, please show this on the screen. 153A, promoting enmity between different groups on the grounds of religion, race, place of birth, etc. This also places severe restriction. And then 153AA, it also says about carrying arms, etc., and possession, or talking or making drills and all that. And the third one is, this is almost analogous. It is in fact mirror image, or it's complementary to the section 124A, that is sedition. When you say anything or imputing or asserting about assertions which are prejudicial to national integration, that is also, because this can be called as a Rashtradroh. You can use an Indian expression, it can be called Rashtradroh. So here also it places restrictions. Then you have 295A, which says that any act or any statement that would create ill feelings among various religious people, or insulting religion by your words, or your pictures and all those things, that also curtails freedom of But expression. all these work one way. I mean, Yes, it no, has never curbed Islamists from no, abusing no. Hindu Let's not faith jump. traditions. We'll come to that. We'll come to that. Then, Yeah. then you have section 505. It says that statements conducive to public mischief. Now here also, particularly the section, the whole of thing is an offence, and there is an aggravated offence in the subsection 3. That is offence under the, if the same thing is said from a place of worship or in a place of worship, it's an aggravated offence. There also it is the freedom of speech is curtailed. Then you have other sections, UAPA and so many other sections of law which curtail your freedom of speech. But then why are we not talking about those? Why are we only talking about 124A IPC? And so my view is that there is a misuse. There is definitely a misuse. And that misuse is always there. In fact, no, the most misused law as on today is SC/ST Prevention of Atrocity Act and Section 498A of the Indian Penal Code regarding the And rape law. beg pardon? Anti-rape law. Plus anti-rape law. Yeah. So all these things are highly misused because no, police are undone. In many times, what happens, we accuse the police of this. Suppose if some lady comes that she has been misbehaved, then if the police officer doesn't do it, the law says that the officer will be suspended if he doesn't register a FIR. So these are all highly misused. This one, it is not that only section 124A is misused. In fact, it is the less misused section. If you see the National Crime Record Bureau statistics, in 5 years or 6 years from 2015 to 2020, 356 cases of sedition have been registered in the country. 356 divided by 6. How much it comes to? It is roughly around 60 cases a year. For a nation of 1.3 or 1.4 billion, 130 crore people, 60 cases of sedition per year is nothing. In fact, it is negligible. Yet, we are making a big hue and cry for this. So there is something more than, therefore, there is something more than that meets the eye. And then interestingly, if I draw your attention to the Law Commission reports, the 39th Law Commission report, the 39th report of the Law Commission in the year 1968, and 42nd report in the year 1971, 43rd also of the same 1971, and 267th in the year 2017 have recommended expansion of the scope of the sedition. It is not that no, they have reduced. In fact, they have, the 1968 report says enhancement of punishment. So therefore, and they have analyzed the
freedom of speech in various countries and the provisions of seditious laws or anti-sedition laws in various countries, and they have recommended. And so that is it's not that only um, the currently it is being talked about. In fact, people wanted it. The problem is the conviction rate under the sedition is as bad as under any other law. So therefore, what the Indian state has been trying to do is substituting enhancement of punishment or making the law more draconian as a substitute for the incompetence in getting convictions. So as a result, what is happening, the more draconian a law is, the more wary the courts are in convicting a person. Because the court may be feeling not feeling very diffident in punishing someone for 6 months imprisonment. But suppose you ask the court to impose life imprisonment, they will see 101 times before doing No, that. no, not for anti-rape law, not for 498A. General, It's no, draconian, but because there what the is courts happening, are happy. they have prescribed, in the rape laws and other, they have prescribed minimum punishment. So the courts are undone because they have to justify if they give punishment less than the minimum prescribed punishment. So the more draconian a law, the less certainty is the punishment, or less certain is the conviction. But then it becomes politically easy or politically more paying, to increase and to make the law more draconian rather than ensuring conviction of the alleged criminals. So this is one aspect. The second one is, if you are taking objection on the ground of freedom of speech, that a law should be struck down, or a provision of law should be struck down on the ground of curtailing or infringing the freedom of speech, then then it is the section 153A, 153B, section 295A, and 5053. These are the four sections of Indian Penal Code which should be struck down, not the sedition law. And secondly, why are we saying that no freedom of expression should concern only the political issues? Why not the religious matters? Why can't people have the freedom to discuss about the various religions? Why can't, in fact, no, it is this curtailment of freedom to discuss about religious matters. It has completely, what I say, stop the growth of study of the comparative religion in India. Nobody now discusses about the comparative religion. If you go back to the pre-independence days, even Ambedkar has written beautifully about Islam, about he has analyzed about Islam, Christianity, Hinduism, and if you use the current yardstick, Ambedkar should be in jail for what he has written. No, so also the Swami Dayanand Saraswati. So our sensibilities are with respect to the freedom of speech is only more about the political matters, but not about the religious matters. So this lopsided approach to freedom of speech itself is not a valid ground to question the sedition law, or for that matter other provisions of the Indian Penal Code. Indian Penal Code. So this is my view. I think solution part I will come to in the next one. In the meantime, I think Ankur can speak. Yeah, it struck me when you were citing figures that sedition law has brought in its net no more than 60 persons per year in No, all of 60 India. cases. No, 60 cases. There are about 500 plus persons. Huh. So 60 cases 60 with cases on an average, 2 persons in each case on an average. So, and of which only 12 persons have been convicted. Can you imagine? yeah, okay. So But, where are the grounds? but, Why are we making a but by mountain? contrast, No, we are making a those mountain of a molehill. This is the problem. that is I was saying, by contrast, lakhs and lakhs of families have been ruined on account of misuse of 498A and anti-rape law,
ruins. Lakhs and lakhs of families are ruined every year. Now, more importantly, the point that you raised about uh, shutting all dialogue, open dialogue on matters of religion, including where religions have agendas that actually promote murderous uh, politics. And they consider it their rightful due. Now, we can't even discuss it. You know, Twitter will ban you, YouTube might ban you, Government of India might lock you up, vagera, vagera. Now, the 60 odd cases or the few dozen people, I think it's clear the whole hullabaloo is because these were targeted for what one would call anti-India, Rashtravirodhi activities, belong to international power circuits. And that's why, never mind how small the numbers and no matter how small the rate of conviction, परंतु उनका एजेंडा देखिए सर्वोपरि हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ध्यान से सुनने लगती है और होल्ड करती है. I'm more this one disheartened by the stand of the government of India. You know, it's a government of India should have simply questioned what has changed in the last 124 years. What has changed in the last 72 years of this existence of this law, that suddenly now there is a plethora of PILs, which even the many honorable judges of the Supreme Court, including the Honorable Chief Justice of India, has said personal PILs have become an instrument for promoting personal interest or professional interest or some kind of interest rather than the public interest. So these are the points should have been brought to the notice of the Honorable Court, and then should have taken a very strong stand. And in fact, no, even the Law Commission reports could have been cited about these. But then sudden U-turn by the government of India is something that is intriguing. सही बात है. अंकुर, आपको नहीं लगता कि ये जो चल रही है मुहिम इसके खिलाफ, not to make it more focused and effective in dealing with real राष्ट्रद्रोह cases, यहाँ तो है कि राष्ट्रद्रोह नाम की चीज ही नहीं कुछ है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि इसको लेजिटिमाइज करना, एक तो खालिस्तानी प्रो पाकिस्तान प्रॉप खालिस्तानी मूवमेंट को खुल के प्रचार कर सको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, दूसरा तरफ जो मुगलिस्तान बनाने के प्लान्स बने हुए हैं, उत्तर भारत में मुगलिस्तान, दक्षिण भारत में दलितिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिस्तान, क्या क्या बनाने के जो प्लान्स हैं वो खुलेआम मंच पे लाए जा सके और उनको इलेक्शन तक का मुद्दा बनाया जा सके, जो आज वो नहीं कर पा रहे. आपको नहीं लगता कि ये जो टेंडेंसीज हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग ने पूरी डिक्लेयर की हुई हैं, उनको अपनी सपोर्ट, कभी किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी आ जाता है एजेंडा, और कभी कास्ट के आवरण में दलितिस्तान यानी देश को तोड़ने का एजेंडा आ जाता है. आप क्या कहेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली, ये तो पहले चरण में भी डिस्कशन के हमने डिस्कस किया कि कौन लोग हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज हैं जो सेक्शन 124A को सेलेक्टिवली चैलेंज करते हैं. राव साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरीके से सेक्शन 153A, 153B, 295A, सेक्शन 505 जो अदरवाइज probably can be challenged as being violative of आर्टिकल 19 जो और जो तमाम और फ्रीडम्स अवेलेबल हैं, उन्हें नहीं चुनौती दी जाती. स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, राष्ट्र के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ जो कानून है उन्हें चुनौती दी जाती है. धर्म के ऊपर, जैसा राव साहब ने बताया, कि उस पे चर्चा का फ्रीडम देना और उसको डील करने वाले जो खासकर 153 है उसको नहीं दी जाती. लेकिन मैं आपके व्यूअर्स के लिए प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इवॉल्व किया है इस कानून को, वो भी थोड़ा रखना चाहूंगा, क्योंकि लॉ कमीशन रिपोर्ट्स की बात तो राव साहब ने की, पॉलिटिकल एंगल भी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी लॉबीज हैं, कैसे वो कोई भी ऐसा टूल हमारे लीगल फ्रेमवर्क में जो उनकी सेसेशनिस्ट और देश को तोड़ने वाली एक्टिविटीज को
कंट्रोल कर सकता है, उसके खिलाफ जंग छेड़नी है, ये चर्चा हमने की। लेकिन लार्जली सुप्रीम कोर्ट देखिए 1962 से हम स्टार्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन द मैटर हैज प्रोबेबली सेटल्ड द लॉ, और उसके बाद चर्चा की जा सकती है कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखिए केदारनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन but limited its application to acts involving intention or tendency to create disorder or disturbance of law and order or incitement to violence, and distinguished these acts from very strong speech or the use of words which were strongly critical of the government. तो मतलब Kedarnath actually took care of your right to exercise freedom of speech, free speech and national security also. देखिए उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि स्ट्रॉन्ग स्पीच और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो आप इस्तेमाल करते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, दैट्स डिफरेंट, और जो देशद्रोह वाली कैटेगरी में आते हैं वो डिफरेंट। उसके बाद बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया कि वर्ड्स एंड स्पीचेज, मैं देख के इसलिए बोल रहा हूं इसमें क्योंकि आई एम कोटिंग, मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट को किसी अलग तरीके से पेश करूं मैं, एंड आई कोट, वर्ड्स एंड स्पीच कैन बी क्रिमिनलाइज्ड एंड पनिश्ड एज सेडिशन only in situations where they are being used to incite mobs or crowds to violent action. जैसा आपने कहा कॉल्स गिवन इन जेएनयू और यूनिवर्सिटीज और एरियाज में, तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत क्लियर आ रहा है। फिर संस्कार मराठे का केस आया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, wherein the court explicitly laid down that comments expressing disapproval of government policies or administrative actions with the objective of potential positive alterations will not constitute sedition. So this is something which is also taking care of your right to expression, freedom of expression, कि आप सरकारी पॉलिसीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को बदलाव उसमें लाना चाहते हो, उसके लिए स्ट्रांगली आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो सेडिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। और लेटेस्ट तो ये जब आईटी एक्ट चैलेंज हुआ था प्रोविजन इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट not only distinguished clearly between advocacy and incitement. देखिए स्टेजेस है ना कि आप किसी विचार में विश्वास रखते हैं, फिर उसकी एडवोकेसी करते हैं, और फिर अगला स्टेप है कि फिर आप इंसाइट करते हैं लोगों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों में भी डिस्टिंग्विश किया है, जो सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड हैं वो किए हैं, बट आल्सो लेड डाउन दैट टू चार्ज अ पर्सन विद सेडिशन देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट established connection between offensive speech and provocation to violence or disruption of public order. और फिर लेटेस्ट, जो मोस्ट लेटेस्ट 2020 की विनोद दुआ की जो जजमेंट है, इसमें तो कोर्ट ने कहा, एंड आई कोट, it is only when the words or expressions used to criticize the government and its policies have pernicious tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law and order that section 124A and 505 IPC must step in. अब देखिए इतने सेफगार्ड्स तो हमारी जुडिशरी ने क्रिएट कर दिए हैं, अब इससे अधिक क्या ये लोग चाहते हैं? कोई भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो देश में विश्वास रखता है, जो देश की एकता और अखंडता को कभी चुनौती नहीं देता है, उसको तो इन सब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में सेफगार्ड्स मिल गए हैं, जिस तरीके से 124A को इंटरप्रेट किया है। लेकिन किन लोगों को इसके बावजूद भी सेफगार्ड्स नहीं मिलते? जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो देश को बाल्कनाइज करना चाहते हैं, जैसा आपने बताया, दलितिस्तान हो, खालिस्तान हो, मुगलिस्तान हो, और कम्युनिस्ट मूवमेंट जो तो देश को तो एक एक स्टेट को अलग अलग नेशन ये बनाना चाहते प्रॉब्ली। सो आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज विद देम, seen in totality, as the law has evolved with the Supreme Court pronouncements and the Law Commission recommendations, I think the law should stay, और क्लियरली आप गाइडलाइंस इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं ताकि किसी भी तरीके के मिस यूज को, एब्यूज को भी प्रिवेंट किया जा सके। पर मुझे लगता है कि हमारे हाई कोर्ट्स या कोर्ट ऑफ लॉज आर, मतलब ये अभी इतने सशक्त हैं कि कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो, दे वुड प्रोबेबली प्रोटेक्ट। तो मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर्स भी तो एक सेफगार्ड अदरवाइज आपको अवेलेबल है, और मिसयूज का तो आर्ग्यूमेंट लिया ही नहीं जा सकता किसी कानून को खत्म करने के लिए, फिर कोई कानून ही नहीं बचेगा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कानून का जिसका मिसयूज नहीं होता, नॉट इवन अ सिंगल। Ankur, there are laws that are easy to misuse. They have intrinsic misuse nuisance value. वो बने ही इसलिए हैं, और वो एंटी रेप लॉ मैं कहूंगी इसी में, उसमें कोई सेफगार्ड है ही नहीं जो एंटी रेप लॉ है। इसी तरह जो पहले 498A था, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको
tweak करने की कोशिश की है through successive judgments, but they are meant to be misused. They were designed to be misused. यहाँ पे you have yourself given a whole history of how they've been actually not just misuse has been contained, but interpreted in a very rational manner. पर आप याद होगा ये शर्जिल इमाम की जो स्पीच थी कि इंडिया की जो चिकन नेक है नॉर्थ ईस्ट उसको कैसे हम काट सकते हैं. नो दैट वाज नॉट जस्ट फ्री स्पीच, दैट वाज प्लानिंग फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द कंट्री एंड सिवियरिंग अ पार्ट ऑफ द कंट्री जो उनका एजेंडा है ही है. तो वो भी अपनी डिफेंस में तो फ्री स्पीच का ही हवाला देता है कि कोई मैंने भड़काया नहीं, मैंने कोई हथियार नहीं उठाया, मैंने किसी को मारा नहीं. So what do you say to that, Nageshwarji? I hope you were listening to Ankur, all the points that he made in support of many of the things you had said. See, in my previous one, I have tried to delineate the problem and then how the Western interests are trying to subvert or undermine the provisions of law. But nonetheless, certain provisions of the law are misused, as we have discussed, apart from the rape laws and then family laws. Then other laws are also misused, particularly those with respect to offences against the state. There is a chapter 6 of the Indian Penal Code, of which 124A, that is sedition, is part. That is the that deals with the offences against the state. It includes many other waging war against the government of India and such other kind of things. Now that whether we like it or not, it has reached the Honorable Supreme Court, and Honorable Supreme Court has already taken notice, and it has issued orders on the basis of the affidavit given by the Government of India that the sedition law shall not be applied for the time being till a further final decision is taken thereon. Now, I have tweeted also tagging the Honorable Law Minister that giving an analogy between the Prevention of Corruption Act and the sedition law. Prevention of Corruption Act earlier in 2018, where the CBI or the ACB, that is the Anti-Corruption Bureau of the states or vigilance, they could initiate action against any public servant on their own. However, when the person is still in service, then one has to go to the government concerned, whether central or state government, to obtain sanction for prosecution, that is to submit charge sheet. Yeah. What the government of India did in 2018, that they have taken away the power of registration of the case directly by the CBI or ACB. They said, except in one or two instances, they said the prior approval, prior sanction of the central or state government is necessary for starting investigation or inquiry or any kind of things. In other words, the CBI and the state SCBs do not have the power to register FIR until and unless they obtain the sanction, prior sanction. After investigation, again you need another sanction for placing charge sheet. That means there is a double check in use of PC Act, and of course that has an adverse impact. That's a different thing. So what I suggested to the law minister through my tweets is the same thing. Currently, Section 196 CRPC. I think can it be shown? This is the one. Ashish ji, please show this. Is 196 CRPC 1973. It says that the offences under Chapter 6, that is including sedition, and 153A, which we discussed, 295A that we discussed, and also Section 505 of the Indian Penal Code that we discussed. These offences, the charge sheet can be placed only after obtaining the sanction from the state or central government, as the case may be. So there is a protection given
for prosecution of persons. But this particular protection given is hardly of any use, in the sense that the police can register the case under for sedition, for 153A for creating enmity between various groups, or for talking about religious matters under 295A IPC. They can arrest, the police can arrest, they can search your premises and do all sorts of things and then apply to the state government for sanction. So that means the harassment or the mischief has already been done against the accused, persons accused of these offences. Now, recently, if you see, the member of parliament, who is that, Rana, an independent member of parliament in Maharashtra, he wanted to do a Hanuman Chalis before, recite Hanuman Chalisa before the residence of the Honorable Chief Minister in Maharashtra, Bombay. And then sedition case was filed against her. I think she is still in jail. That is a Husband clear. and wife, both husband and wife team Yes, are husband in is jail. and she is. And for reciting only and only No, no, no. reciting Hanuman Chalis. She has not recited. She only gave Yeah, a program to collect people to recite Hanuman Hanuman Chalisa. Chalis. Chalisa. Now, this is a clear case of misuse. So, therefore, what is required is, on the lines of the Prevention of Corruption Act, the amendment, they should amend section 196 CRPC, as I have shown before, where it should be mentioned that prior permission of the state or central government shall be necessary for registration of FIRs under the sedition law, anti-sedition law 124A and 153A IPC and 295A IPC and 505 IPC, so that the state government, in consultation with the law department, will be able to apply themselves whether really a case is made out under these sections, because 153A is so misused, particularly against Hindus. Anyone who is talking about even a academic discussion about comparative religions can be charged, can under these offences, under these 153 and 295 AIPC. So, if you have such a provision where the prior sanction of the state government is necessary, then there will be application of mind at the government level through the law department by taking opinion. And if they really find that an offense has indeed been committed, then they can file a FIR and do the arrest and search, etc. And again apply after the investigation for sanction for prosecution. This double check will prevent any kind of misuse. This is what is required to be done by the government of India, and not removal of the section 124A IPC, so that the innocents who are getting harassed by the for political considerations as regards 124A and for religious considerations or pressure imposed by the certain sections of society can be prevented. Now, I would like to say this, that the freedom of expression, as guaranteed by Article 19 of the Constitution, now in India is subject to the prejudices, caprices, or fancies or whims of the local Thanadar, who can book you for creating enmity between various groups if you simply talk about what is going on in a particular locality or in a particular area, or 295A IPC, or for anything. So the fundamental right cannot be subject to the whims of a particular officer or a Thanadar, or more often than not, the Thanadaras are also under great pressure by various sections, by groups. So this particular check, where prior permission of the state government is required for filing FIR, will
prevent any kind of misuse. In fact, it will also help the Thanedars to escape the pressure being brought upon them by the political parties or the other religious groups who want to fix the persons speaking truth. So this kind of नागेश्वर जी, दो बातें हैं इसमें. आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर जो है इसको ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि एक थानेदार महज थानेदार न जाके इसका मिसयूज करे. किंतु अब आप देखिए, अगर आप बंगाल में एक हिंदू के रूप में रह रहे हैं तब तो स्टेट गवर्नमेंट पहले ठोकेगी. थानेदार ठोके ना ठोके, ममता दीदी पहले ठोक देगी. पंजाब में अगर नहीं, मैं ये प्लीज जस्ट लेट मी फिनिश सर. व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, क्योंकि हमारे देश में एक भी कोई ऐसी संस्था नहीं बची, कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप, कोई सिविल लिबर्टीज ग्रुप, कोई डेमोक्रेटिक राइट्स ग्रुप जिसको हाईजैक माओइस्ट ने या इस्लामिस्ट ने या मिशनरीज ने नहीं कर लिया. पूरी मोनोपोली है उनकी इन सवालों पे. और होता क्या है कि अगर आप ऐसे राज्य में हैं जहां हिंदू हॉस्टाइल गवर्नमेंट है तो आपके टुकड़े टुकड़े भी कोई कर दे, कोई चू नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई उसका जिक्र भी नहीं होगा. परंतु यदि आप भाजपा के किसी स्टेट में है और वहां आपको जायज बात पे भी बुक कर दिया तो आप ग्लोबल सेलिब्रिटी बन जाएंगे. ये जो एक समस्या खड़ी है कि उसको आंकलन करने वाले इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, कोर्ट्स भी डिवाइडेड हैं, जजेस भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन और पॉलिटिकल अलायंसेस और अलाइनमेंट के अनुसार काम कर रहे हैं. तो ऐसे में मिसयूज होना तो निहित है. आप बताइए, वुड यू लाइक टू लिव इन पंजाब ऑफ टुडे अंडर केजरीवाल गवर्नमेंट? अभी बग्गा को जैसे अरेस्ट कर लिया, या जो महाराष्ट्र के कपल को, आई वुड बी अफ्रेड ऑफ लिविंग इन बंगाल अंडर ममता दीदी. At least, if you get arrested, if somebody gets arrested in a BJP ruled state, तो आपकी कम से कम विक्टिम्स की लिस्ट में नाम तो आएगा. अगर गलत है हुआ, गलत क्या, वहां तो सही हुआ, तब भी आप विक्टिम्स में विक्टिमहुड का नैरेटिव आपके साथ चल पड़ेगा. परंतु दूसरी ओर तो बिल्कुल नहीं चलता. उसका क्या किया जाए? See, law can be, as we already discussed, law can be misused for political or other considerations, including for various other. That's not the point. The point is what is there in the law. As on today, there is a check after the investigation, but there is no check before the investigation for starting the investigation. See what is ideal. The law provides for ideal situation, and what is the real situation is how we enforce the law and how we try to take that ideal situation and realize it on the ground. Now, if we provide this kind of thing, even Bengal government, let me tell you, the law department or any department, it's not that every officer or every wing of the government is compromised. There are people who are still not compromised, and they do apply themselves and before giving sanction. It is not that much everything is. So therefore, what I mean is that instead of leaving the our fundamental right of freedom of speech to the whims and caprices of the local Thanedar, who himself may not be willing to register it, but because of the pressure being brought by the local political party or the local political leaders or the religious leaders, suppose if it goes to the government, because in the government, it's not that the government so moto does it. It has to go through the proper channel. The Thanedar or the district SP has to examine and send it to the DGP, and then DGP will examine it and send it to the Home Department. Home will send it to law, then it will go. So there are many stages through which filters through which it passes through. It's not that easy, even if whether it is a Kejriwal government. Nageshwar ji, all very well to say that, but take the case of Rizvi Urf Tyagi. अब उसको भी एनिमिटी प्रमोशन के नाम पे कितने महीने हो गए जेल हो गए. I didn't get your name. I get the name of the person you said. जो रिजवी साहब थे, जो फिर त्यागी बन गए, घर वापसी की जिन्होंने. But you only said it's a BJP government. They have done it.
What am I saying? What am I saying? I'm saying this. I'm saying that if let me tell you. Sharjeel Islam, let me pose my question. If Sharjeel Islam is arrested, put behind bars, he becomes a cause célèbre for the world because it is a Muslim who is seen to be persecuted by a Hindu BJP. ये इक्वेशन बन जाती है. तो उसके लिए बेस्ट लॉयर्स हैं, बेस्ट मीडिया है, सब कुछ है. दूसरी तरफ जो रिजवी साहब के साथ हुआ, डॉक्टर रिजवी, जो कि घर वापसी करके त्यागी बने क्योंकि वो हिंदू बने. अब वो हिंदू की तरह बात कर रहे हैं, कोई खड़ा भी नहीं हो रहा ना उनके लिए. तो और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां कोई खड़ा भी नहीं होता, क्यों, चाहे वो बीजेपी के सरकार के अंदर हो. So long as you're speaking as a Hindu, you are upholding the Hindu rights issues or talking about Hindu persecution. तब आपके साथ हो जाए तो कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ. ये कह रही हूं मैं. See, these are two different issues. One is I'm talking about the legal checks and balances, and what you have mentioned. लीगल चेक एंड बैलेंस आप बताइए ना, महाराष्ट्र में क्या है? Exactly. वो जो एमपी को, वो तो चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है उसमें. If such a thing had been there, probably it would have taken time and people have gone through the proposal, or people have gone through the issue, and I don't think any government servant would have approved that kind of thing, or any lawyer or any law department would have given any an opinion for registration of the case. Because now it is only the Thanedar who has to take a decision. And now he is under tremendous pressure to register an FIR. And once an FIR is registered, you have, then the next step, logical step is to arrest and then conduct search and other aspects of investigation. And as regards to what you have mentioned, that how the things are becoming global issues and all that, that is politics, that is the deep state working and all other things. It has nothing to do with law, but only shows how weak the government is in handling those matters. अभी अर्नब गोस्वामी को भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया ना अरेस्ट. हाई प्रोफाइल वो इसलिए बन गया, कम से कम लोगों को पता चला, क्योंकि उसकी टीवी चैनल 24 घंटे उसके साथ. But was it a sedition? Political power structure at the very top endorsed his arrest and his incarceration. And if he did not own a TV channel... No, we are discussing about the sedition law. Was he booked under sedition? No, we are talking about the fact, you're saying so long as the chief minister or the chief, home secretary has to take a call, then there's less chance of misuse. That's the point. I'm saying today that that safeguard doesn't seem to work. It's not the safeguard. Every system is as good as the people manning the system. If the people manning the system are bad, the best of the systems can be subverted. If the people manning the system are good, even the worst of the systems can be made good. So that is the problem. The problem here is we have made politics a kind of it is almost a warring groups. Political parties have become warring groups instead of being political opponents. They are trying to use all kinds of instruments. What to speak of this one? BJP has been misusing. So, in fact, it has reached the misuse of the law enforcement agencies under the BJP has reached its zenith. So, what do we talk of this one? Naturally, see, I have tweeted also. The enmity that is being created between various state police forces is unprecedented. Earlier days, irrespective of the political party, the state police forces have very good working relationship across the state borders. If a DGP or the SP or the IPS officer from one state makes a request to his counterpart on the other side, you would get ready-made, you would get very good response. But now it is not so. Now it is not so. In fact, we are people are booking cases against one another. True. So that is because of the politics.
when one central government or state government misuses the law enforcement or the powers available to them, then the other side retaliates. So this is in fact no, this is much to do with the politics and less of law and more of politics, and the divisive politics that we have brought into this. And the politicians are looking the opposition leaders as some kind of enemies. This is not going to do any good to the country. In fact, it will be extremely harmful to the country. If we see that no any other person who differs, who has a different ideology or who has a different points of view on politics or religion, other thing as your enemy, that's not going to do good for the country or the society. I agree, but this mindset comes essentially emanates from the left, not even so much from the No, Congress. but it is also say same thing. See whether it is left or Now right, BJP, everyone is doing it. Everyone is doing it. Irrespective of the color of the Nageshwarji, I agree that BJP has now, the BJP leaders are now following the same path, which is treating opposition as enemies, not as. But that's the nature of of politics globally. No, it's not the nature of politics 20 years ago or 15 years ago or 30 years ago, 40 years ago. It has been made extremely inimical or extremely divisive only in the last few years. I mean, how, for example, Nehru treated Patel. No, you see, Or, I mean, politically trying to undermine your opponent, whether within the party or outside party, is one thing, and using or misusing or abusing a law enforcement agency to fix someone and send him to jail or such other kind of thing is totally different. That's not politics. That is actually vendetta. but Congress did it with No, Hindu Maharashtra. yes, Congress did it, but you see, I'm not saying Congress may have done it. BJP is doing it. Other parties also done Now it. BJP has started doing it. The point I was making is this. Don't tell me it was not done. The Congress unleashed this mindset and actually established many deadly precedents of I don't, fixing I political don't, opponents. no. I don't think so. Because no, they have not reached, they have not done this bad. At least not till 2004. Maybe after 2004, they may have done it. Nehru era, what they did to the No. Hindu You show me outfit? one case during Nehru era or Indira Gandhi era, or where even when people are booked, they were not. They were used they were emergency. Most of it political reason. Nobody was no income tax or no ED or no CBI or all those things. These things were unheard. At least no, I know in many states. Income tax raids were very common during Congress regime against opponents. And I remember even Tavleen Singh writing column after column because when she parted company with Sonia Gandhi, Solitary, her living partner was raided there time is and a again. no, Madhuji. There is a difference between solitary case It and wasn't a so pattern. solitary. And Today a it pattern. looks more. Nageshwarji, it wasn't so I'm solitary. talking of. I'm talking in terms of the 124, the sedition law mostly, because this is being misused by every party. It's not that no BJP misusing, Yeah. Shiv Sena misusing, and then Trinamool Congress misusing, DMK may be misusing, or AIDMK, don't know. But everyone is misusing. It's not that no there is a saint in here and somebody is a sinner and somebody is a saint. So the Yeah, I politics, agree with you. all, So all you that are saying, all that I want to say is this: the vendetta politics, in fact, is destroying the uh, fabric of this nation. This is not going to pay us. In fact, it is going to create more and more problems. This country is united not because of law. It is united because we all share one nationhood. We are all part of one nation. We are all part of this great civilization. That is what we share. Now you create differences. You misuse the law. You misuse this one and create and exacerbate
fault lines and then for political short-term gains. So this that is going to cause a lot of destruction to the national fabric of this country. This is what every politician and every officer must keep in mind. I fully agree with you that we must not allow vendetta politics to take charge of the political domain. I agree with you. Now, for But- instance, I would like to give you example, the governor's role. Now, governors, normally it has been clearly said so many times by the Honorable Supreme Court, and it is also the practice, tradition, and this one, that governor is a ceremonial post unless there is an extraordinary situation. Like similarly, the president, whatever the prime minister or the council of ministers sends proposal, the president is only, he has to put his rubber stamp and then send it back. Similarly, the governor. The governor is not required to apply his mind. But then, what is happening? You see in certain states how the governors are behaving. Is it going to help the federal polity, federal situation, or federal relations? Is it going to help unite the country? These are the things which need to be condemned irrespective of the party, whether it is BJP, Congress, or Shiv Sena, or Trinamool, Yeah, or DMK. fully agree with you. Fully agree with you. Fully agree See, we with you must there. know the governor is a ceremonial role. It's like a grandfather sitting at the home. You know, our grandmothers or grandfather. There used to be a tradition in this one. Right now, it is broken. When you are going out of the home, you have to inform the head of the family. Not that he is going to tell you don't go. All that you have to do is, no, I'm just going to the market, or I'm going out, going to the college, or going to the school. He is not going to stop you, or he is not going to do anything. So governor or the president is like that. Just because someone, the chief minister or the prime minister, informs the governor or sends something for his approval, that does not mean that he has any say in returning it. If he has anything, he can better discuss with the governor, with the prime minister, the chief minister. I think now we are expanding it too far, too wide. Hmm. In my living memory, I think Congress has misused governors quite merrily and dismissed governments quite Yeah, happily definitely. whenever any government fell out of line. In fact, Indira Gandhi and even Nehru before that, they That were is how famous for Sarkaria just Commission dismissing. report and then Exactly. At least we haven't seen any dismissal, even when there has no, it's been, not about for dismissal. example, in the case of Bengal, when violence was unleashed following the electoral results recently, there was demand that this merits central rule, governor's rule, but it wasn't done. I cannot imagine if But Indira who Gandhi will do had that? been Now tell governor. me whether it is a role of governor, it is the prime minister and the home minister who will impose the president's rule. No, I agree. All I'm trying to say is Yes. that there was much more authoritarian, anti-federal moves made during Congress regime, and centralization of power emanates from those days. Of course, Modi ji has followed the same practice, and his PMO has become actually a mirror image of what Indira Gandhi's PMO was, or perhaps even more. Perhaps even more of a control freak PMO than ever before. But the fact of the matter is, Indira Gandhi would have just dismissed as many governments, state governments, that didn't tune in with her concerns and her diktats. Here, at least, nobody's getting dismissed. No, That's the point I was trying to make. Madhuji, And just one second, vendetta politics is not the one second, Madhuji. The law, the constitution means that there are provisions of constitution which have to be utilized, used when needed, not to be misused. If there are cases where people of a particular religion are being targeted and killed, or atrocities are committed on a large scale in an organized manner, if the government of India does not use the constitutional provision, what does it mean? It means that it's the government of India that has failed. Yeah.
And then the government of India cannot take the plea that no, we are trying to be more federal and all that. That is nonsense. That you are Yeah. failing in your duty in protecting the lives and property of the people. Yeah. So to conclude, shall we say, A, the sedition law has been well trimmed or well controlled by various Supreme Court judgments, and its misuse cannot be attributed to real flaws in the law. Would you agree with that? Let's come to some Do agreements. you want me to summarize? Yes, please. The sedition law has been in existence since 124, for the last 124 years. That is since 1870. Nothing has changed since then. Even after coming into the constitution in the year 1950, there is not much change. And then even in the last 4 years or 3 years or 2 years during which the petitions have been filed, there is no misuse which was not more than what was earlier, which warrants that the sedition law should be reviewed. One. The second point is that, like the any other provision of law, the sedition law, the law relating to curtailing the freedom of speech with regard to the expressing opinion on religious matters, that is 153A, 295A, and 505. These are the provisions. If the government feels that no, we need to put a checks and balance for all these provisions, there has to be a check in terms of prior sanction for registration of FIR. They cannot simply selectively put any more checks on the anti-sedition law and leave out the what is that, anti-freedom. SCST Act. Oh yeah, SCST had anti-freedom of expression with regard to religious matters. And secondly, freedom of speech does not mean freedom of speech of relating to political matters only. Freedom of speech is all encompassing, which includes freedom to talk about and criticize about religious matters and religions. So this also should include. So if we do not include religion, then it will be lopsided appreciation and application of the freedom of speech provisions. So therefore, anti-sedition law must remain with a provision that the prior sanction of the government for registration of FIR should be mandatory. Fine. Well said and well concluded. I mean, I think with this summary, I have absolutely no difference. I think there was a slight bit of difference about who's carrying out vendetta politics. In my living memory, Congress, the communists, they actually institutionalized it, and now BJP has picked it up very well, and that's not the way to go. But BJP is also bizarre in its application of vendetta politics, where it should actually crack down heavily, it doesn't do so. And where it obviously appears overkill, a case of overkill, वहाँ बहुत जल्दी कर लेते हैं और आनन फानन में केस भी डाल देते हैं, फिर उसको डिफेंड भी नहीं कर पाते. To me, the bigger worry is they file sedition cases, they'll file cases under anti-terror law, but the investigation will be so poor and the evidence gathered is often so poor and so shoddy that at the end of the day we have acquittals galore. ये बहुत खतरे की बात है कि इतना सीरियस किसी के ऊपर चार्ज लगाओ और फिर वो एक्विट हो जाए, या कोर्ट से डांट पड़ती है आए दिन सरकार को कि ये क्या किया आपने, ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है, ये कैसा एविडेंस आप लेके आए. ये मुझे लगता है बहुत ही खतरे की बात है, क्योंकि जब कोई टेररिस्ट छुटता है ये आधार पे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, या एविडेंस नहीं है, या आनन फानन में लगाया है, तो टेरर एक्ट तो हुआ है. इसका मतलब असली टेररिस्ट को छोड़ दिया आपने और किसी के ऊपर, या आपने असली टेररिस्ट पे इतना कमजोर मुकदमा दर्ज किया है, इतना कमजोर चार्जशीट है कि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते. So I think these are things that need to be causes for concern. Our law and order machinery, our judiciary, they are tottering.
that these institutions are tottering largely because our politics is in quite a mess. So, with that, unless you want to add something, No, no, thank you. Nageshwarji, Thank you. thank you very much for your insightful views and the wealth of information that you bring into the subject. Thank you very much. Okay, viewers, please do like, subscribe, and share to our channel and do support us. और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज विदाई लेते हैं और कल फिर मिलेंगे. तब तक प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए. शुभ रात्रि. जय हिंद.